मंत्रमयी सावित्री समस्त को एक प्रेम सत्य बांधि रखू, समग्र जीवन को नियंत्रित करू, यही कामना करी आसंतो किसी लाइन आम पाठ करिबा। सावित्री बुक 1, द बुक ऑफ बिगिनिंग, कैंटो 4, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 49, section 2. We'll take few lines from here and then advance to some other lines. These lines have already been discussed in the last class. We here only will discuss some important lines here. But all is screened, subliminal, mystical. It needs the intuitive heart, the inward turn. It needs the power of a spiritual gaze. Else, to our waking minds, small movement look, a goalless voyage seems our dubious course. Some chance has settled or hazarded some will, or a necessity without aim or cause, unwillingly compelled to emerge and be. In this dense field where nothing is plain or sure, our very being seems to us questionable. Our life a vague experiment, this whole a flickering light in a strange, ignorant world. The earth a brute mechanic accident, a net of death in which by chance we live. These two stanzas shows the plight of man, the struggling of the man, the situation and position of the man in the world, on this earth. It reflects upon the grief, pain, sorrow, struggle, stress on the part of human being. So the section 2 begins with, but all is screened, subliminal, mystical. Here in this world, on this earth, we live in a precarious condition. Everything is here. God is here. Truth is here. Blessing is here. But all are disguised. All is screened. All is subliminal, mystical. Why? Because we have no capacity, we have no power, we have no will, we have no effort to know the truth, because all these screened, subliminal, mystical will reveal before us, will come before us. What is behind will come before us. But
there is something to do on our part. What we need for that? It needs the intuitive heart, the inward turn. It needs the power of a spiritual gaze. These things are inevitable for us if we are able to reveal this truth which has been screened, which has been subliminal, which has been kept under the threshold of surface life, which has been mystical so far to us. It needs the intuitive heart. The heart is the center of wisdom, the center of feeling, the center of emotion, the center of wisdom of feeling. It has the capability to receive the signal of the truth. It has the intuitive power. So we need a heart full of intuitive. We need to turn inward to get out of the surface world and turn into the deep in order to feel that something is there waiting for us, calling for us. We should be able to hear that call. Inward turn is most important. All these things possible if we have a spiritual gaze. What we see in our eye, what I hear, this is all about the surface things, surface world. We interact the surface world in each and every moment with our sense. We see the surface thing. We see what is happening around us, but unable to find out what is behind it. We should have a spiritual gaze. एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि आमर दरकार. आमे जहाँ देखुचु ताहा एक बाह्य स्वरूप, एक बाह्य रूप, एक बाह्य प्रक्रिया मात्र. यार पश्चात पटरे प्रकृत सत्य लुचि रही. आमे ताकु खोजी बाहर करिवार उपाय अछि एकमात्र. आमे एकमात्र उपाय आम पाखर अछि ताहाला एक आध्यात्मिक दृष्टि. प्रत्येकटी वस्तु, प्रत्येकटी जिनिस, प्रत्येकटी परिवेश को आम एक आध्यात्मिक दृष्टि देखा निहाती आवश्यक. जदि आम आध्यात्मिक दृष्टि वस्तुटी को देखुनु, परिवेश को जानूनु, ताहले आम केवल ऊपर भूतरे सीमित अच्छु, प्रकृत सत्य ठू बहुत दूर रे. से एक आध्यात्मिक दृष्टि दरकार. We will see the different things. The ordinary man can see the things which is appeared, but behind the appearance only those can see who have the spiritual gaze. से मैंने सक्षम हेबे जे एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टिर शक्ति जहाँ पाकर अच्छी से केवल आपियरेन्स पछरे छपरे सत्य को आविष्कार कर समर्थ हेब. एवं इंट्यूटिव माइंड, इंट्यूटिव हार्ट. आम जो स्तर रे अच्छु, जो परिवेश अच्छु, जो सरफेस वर्ल्ड रे बचुचु, प्रति मुहूर्त रे बाहर घटना अघटन को आम रिएक्ट करचु, एक्ट करचु. केबे आमे भाविचंती जे वो इन रियल थिंग the surface value has no importance. आमे
बाह्य वस्तु उपरू निजर नजर हटाई थरे नजर पकेबा अंतर भितरे अंतर्दृष्टि को पाथेय करवा अंतर्दृष्टि सामर्थ्य नहीं आगेबा एवं से अंतर्दृष्टि से वस्तु पछरे छपी महान सत्य को आविष्कार करवा दैट इज व्हाई वी आर हियर सो वी नीड द इंट्यूटिव हार्ट वी नीड द इनवर्ड टर्न वी शुड टर्न इनवर्ड दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट थरे भीतर को फेरी जावा बाहर बहुत खोजिले बाहर बहुत देखिले किसी लाभ है नहीं आसंतर भीतर को फेरी जावा भीतर ही निजको आविष्कार करवा जो छाड़ी आसते से आरंभ करवा सो इनवर्ड टर्न and an intuitive heart is all that we need at the moment. केबे देखिचंती फूलटे फुटीची फूलर फोटो पाखरे आम ठिया हवा फूलर रूप विषय एक सम्यक धारणा आसीबो किंतु फूलर फीलिंग आसीबोनी मते आम जे पर्यंत गछ पाखे ठिया फूलटी को निरीक्षण न करछंती एवं से फूल भितर लुचि सत्य को जो आम जाना जे पर्यंत आम जाना चेष्टा न करूँ जे पर्यंत एक आध्यात्मिक दृष्टि आम ताको भल न परिखीछु से पर्यंत फूलर प्रकृत महत्व व अर्थ आम जापर नहीं सो वी डोंट नीड द नॉलेज of outward thing we don't need to read volumes of books we don't need to listen a lot of things we need one thing that is inward turn when it will begin when we will see inside us when we will have a spiritual gaze केते केबे एक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं दुनिया को आम देखा प्रत्येक वस्तुरे प्रत्येक पदार्थ रे एक जीवन अच्छी एक इतिहास अच्छी एवं एक लक्ष्य भी अच्छी केबे चेष्टा करछन्ते आमे फूलटे फुटी फूलटी फुटिया पछरे कौन अच्छी केबे भाविछन्ते एक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं ताको परीक्षण करछन्ते अवलोकन करछन्ते your heart will respond directly to the feeling of the flowers फूलटी फटो देखिपार एवं ता सौंदर्य को एक रिजनिंग फ्रेम भितर आंकीपार किंतु फूलटी पाखरे प्रकृत गछरे झुलुथिबा फूलटी पाखरे ठिया होई जतले यू विल इंटरैक्ट विथ दैट फ्लावर योर हार्ट विल रेस्पॉन्ड एंड द फ्लावर विल रेस्पॉन्ड टू योर हार्ट यू विल फील समथिंग डिफरेंट So all that we need is an intuitive heart and all important thing is inward turn. We live on this surface world but our roots should be there in the depth. From within we will see the outside world. From outside we cannot see the inside world. We have to plunge into the we have to plug into the deep. We have to dive into within. You have to go within to find the truth kept secret behind all these things. जदि आमे या करूना हूँ जदि इंट्यूटिव हार्ट रस इंट्यूटिव हार्ट आम बहुत दूर अच्छू जदि आम के निजको निज भितर पाइबार चेष्टा करना जदि
आम एक आध्यात्मिक दृष्टि रखिबारे कौन सी जिनिस उपरे आम अक्षम होइछु तेबे सबुदिन आम चारिपटरे आम बाहर जहाँ किसी जिनिस अच्छी इट विल रिमेन स्क्रीन्ड इट विल रिमेन सीक्रेट इट विल रिमेन subliminal as usual and it will be mystical forever. That is the secret knowledge we should know. Or else to our working mind small moment look a goalless voyage seems our dubious course. Some chance has settled or hazarded some will, or a necessity without aim or cause, unwillingly compelled to emerge and be. Next stanza टी आम देखा आम से ही पृथ्वी भितर अच्छे जोठी we have an momentary look on all things, जोठी we live by chance and chance has settled everything, or a will, whether it is chance or something else, has hazarded our living, our course of life, and our journey is aimless, our voyage is goalless, because we are not tuned to the direction, we are not tuned to the destination where should be. एमती जना पड़े एक नेसेसिटी आवश्यकता से प्रकृति हो कौन से आकस्मिक प्रक्रिया हो गोटे नेसेसिटी द्वारा सब परिचालित होची आ से नेसेसिटीर निजस्व गोल भी किसी ना, नो कज कौन से कारण भी ना, किंतु होची इन ए वेरी मेकानिकल वे. ए फोर्स इज रिपीटेड विदाउट एनी एम और गोल, and it is unwillingly compelled to do something, to be something. That is the precarious condition of the world where we live in. In this dense field where nothing is plain or sure, our very being seems to us questionable. Our life a vague experiment, the soul a flickering light in a strange, ignorant world. The earth a brute mechanical accident, a net of death in which by chance we live. This is the world we live in. This is the life we lead. डेंस फील्ड माने कौन? वी आर लिविंग इन ए फील्ड व्हिच इज कंप्लीटली डेंस्ड. घंच जोटी पथ देखा जाए ना. पिला बेले मो मन पड़े गोटे इनसीडेंट. गाँव अनति दूर रे एक जंगल थिला. साधारणतः पॉपुलेशन कम थिला, जंगल भीतर कहीं जाती नहीं. जंगल भितर गले हजिबार बहुत चांस थाए, किंतु आमे बहुत लोभ थिला. कोई भूई बरकोली कहती लटालिया कंटायुक्त कोड़ी गुल्म बुदा भली थाए विस्तीर्ण आकार एवं मझिरे डेन्स फरेस्ट, मतलब बड़ बड़ गछ सब पूरा घंच जंगल हिसाब गोटे गोटे घंच जंगल सृष्टि करें. आम कोड़ी लोभर भितर भितर पशिगलु. आउ जंगल भितर जो पशिलु
धीरे धीरे बाट बुली बुली आम कौटे एंट्री करते बाट बुली बुली भितर छोट छोट बाट अच्छे सी आउ गोटे पैच को नहीं सेठू आउ गोटे पैच नहीं जाए आपड़ जो आसी से बाट भूली जाइए जो किसी अनमाइंड भूल हो भूली जाए तापर जो बाट को आप धरवे से आउ से जंगल भितर से बाट पड़े एवं आमर अवस्था सीया था संध्या हो गला फेरी पार्लुनि आम भाविले फेरी पार्लुनि कि गोटे उपाय था जे आमर गाँव डायरेक्शन जो था सी रेल लाइन थी रेल आवाज सब था से समय रेल टे आसला तो आवाज आम फॉलो कर से रास्तार ये कर बहुत कष्ट बाहर जुआड़े देखिलु खाली घंस जंगल खाली खाली गछ गुल्म बुदा तेणु आवर लाइफ इज लाइक दैट वी आर लिविंग इन ए फॉरेस्ट व्हिच इज डेंस एनफ टू फाइंड द वे ऑफ आवर लाइफ देयर इज चांस ऑफ मिसिंग योरसेल्फ इन दिस डेंस फील्ड ऑफ लाइफ ये वस्तुराज भिड़ बहुत अच्छे मासेस ऑफ मैटर डेंस ऑफ मैटर या भर भूली जावार चांस बहुत अधिक एवं भूली जाइए भी आम इन दिस डेंस फील्ड वेयर नथिंग इज प्लेन एंड श्योर ये किसी प्लेन नहीं किसी श्योर नहीं नथिंग is simple, nothing is plain. In everything you will find the difficulties, you will find the pain, you will find the suffering. There is no straight line. बड़ा कथा है ये डेंस फील्ड रे आमे ए जावत बंचीचे कहीपर आप रास्ता कौड़े अच्छी आम कहीपर आम रास्ता ठीक ट्यून्ड हो अच्छी कि ना कौटी अच्छी ना कहीपर कहीं वी आर लिविंग इन ए डेंस फील्ड आवर वेरी बीइंग seems to us questionable why we are here where we have come from where to go ये तीन टाइम प्रश्न उत्तर आम पाखर नहीं वेयर यू आर ता भी कहीपर कौटी अच्छे हे ता भी कहीपर बिकज एवरीथिंग इज स्क्रीन एवरीथिंग सिक्रेट तुम्हें जहाँ देखुच से नुहे दिस विल डिसीव यू इफ यू टेक द अपीयरेंस एज ट्रूथ वन डे इट विल डिसीव यू विल बी डिसीव्ड बाय द अपीयरेंस कौटी आसीच जान कौटी अच्छु भी जान कौटी जीव भी जान एवं भी कौटी अच्छ भी जान तेणु आम ये जो एक्जिस्टेंस आमर ये सत्ता प्रति एक क्वेश्चन एक प्रश्नवाची बड़ा प्रश्नवाची और वेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल कहीं अच्छे व्हाई वी एक्जिस्ट हियर दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व वी हैव टू फाइंड आंसर टू दैट क्वेश्चन our life a vague experiment if you have a life by chance then you are also living by chance but you have no certain answer about it you take the life as experiment but that experiment has no goal गोटे जिनस को एक्सपेरिमेंट कर देयर शुड हैव ए गोल तार रिजल्ट पाई आप एक्सपेरिमेंट कर रिजल्ट नहीं लक्ष्य नहीं ताले से एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस रो वैल्यू कौन अच्छे इट इज ये गोटे केवल फेज गोटे प्रोग्रेस विदाउट एनी मीनिंग सो हियर आवर बीइंग इज क्वेश्चनेबल आवर लाइफ इज वेग एक्सपेरिमेंट एंड बड़ कथा है सोल व्हाट यू थिंक अबाउट सोल सोल कहले आम मन भर कौन टा आसे किसी आसेनि अस्पष्ट अस्पष्ट ये
जे वी आर लिविंग इन एन इग्नोरांट वर्ल्ड इन ए डेन्स फील्ड आउ से सोलटी से इग्नोरांट अंधकार महा अंधकार निश्चेतनार महा अंधकार भितर झिकिझिपि बा झिकिझिक करुवा एक क्षीण आलोक मात्र ये कम माने जना पड़े ये आम जन्म सहित आसे एवं मृत्यु सहित विलीन हो जाए जाओके आम आत्मा कहूँ इट सीम्स लाइक दैट नॉट दैट इट सीम्स लाइक दैट आमको से भी जना पड़े because we exist here with the power of spirit and that power of spirit is within us. For that we exist only here. So our life our condition of life is like that, our existence is like that. आउ बड़ कथा जो पृथ्वी आम अच्छा द अर्थ ए ब्रीट मेकानिक एक्सीडेंट द अर्थ ए ब्रीट मेकानिक एक्सीडेंट यू रीड द लाइन्स विथ एवरी वर्ड विथ ए पॉज एंड थिंक ओवर इट नॉलेज बहुत गुड़े बही पढ़ीदे आपण ज्ञान प्राप्त होइजिबे किसी माने नहीं यू विल बी डाइवर्टेड खाली थरुटे चिंता करी गभीर चिंता कर ये शब्द उपर ईच एंड एवरी वर्ड इज मंत्र केते थर केते बड़ आवाज रे कहले हबो दिस अर्थ इज ए ब्रीट मेकानिक एक्सीडेंट कहीं कहला इट सीम्स लाइक दैट हमको एमि जना पड़ुछ कहीं आम सत्यर बहुत दूर रे ब्रीट एक्सीडेंट कहर अर्थ है ना आम अतीत जाचु ना भविष्य जाचु वी आर लिविंग बाय चांस हियर द अर्थ हैज कम बाय चांस हियर दैट इज व्हाई इट हैज बीन ए नेट ऑफ डेथ से ये पृथ्वीटी आम एक नेट ऑफ डेथ है a net of death in which by chance we live. No guarantee is here. You live by chance. Because here death rules, life is an exception. Remind it. यही पृथ्वी रे मृत्यु ही राजत्व करुची आउ आपन जीवन एक व्यतिक्रम मात्र चिंता करूँ चिंता कले चिंतामणि आसवे पढ़ले हेनी सावित्री फाउंडेशन में 2 जन लोक अच्छे कई नथिबे भाषण देवाई आप कोर्स करते किसी ज्ञान आहरण करते से किसी काम लगे जेपर्यंत यू हैव नॉट प्लंग्ड इनटू इट a net of death in which by chance we live. This is our condition. यही तीनोटी स्ट्रांजा सेक्शन 2 रा तीनोटी स्ट्रांजा मनुष्यर स्थिति अवस्थिति एवं तार भाग्य को एवं दुर्भाग्य को कुछ वी आर लिविंग इन ए प्रिकारियस कंडीशन 3टा स्ट्रांजा तापर अर्थ विषय कहबो all we have learned appears a doubtful guess. All we have learned appears a doubtful guess. The achievement done a passage or a phase whose further end is hidden from our sight. A chance happening or a fortuitous fate. 1 2 3 4 चारोटी लाइन चारोटी लाइन आम अचिवमेंट विषय कौच आम जहाँ नहीं गर्व करुचु आम जहाँ नहीं निजक गौरवान्वित मिलूँ निजक से 4टी लाइन नलिफाई कर दूस यू नो नथिंग all you have learned appears a doubtful guess.
द अचीवमेंट डन ए पैसेज और फेज गोटे ब्रिज काम हो ब्रिज रो कंप्लीट ब्लू प्रिंट गोटे श्रमिक को मालूम नहीं राति दिन इटा बहुत सीमेंट बहुत रड छाड़ुवा गोटे श्रमिक को मालूम नहीं सी कौन कर से ब्लू प्रिंट नहीं ताकू पचारू आज केते काम होला ना आज एते काम होला एते इटा जोड़े होला एते सीमेंट गोला होला एते रड फेंसिंग होला कौन होगा ना तुम जानी कौन हम आज करदेली वी आर लिविंग बाय प्रेजेंट विदाउट एनी गोल ठीक अच्छे वी लिविंग बाय प्रेजेंट ठीक अच्छे तार पॉजिटिविटी अच्छी किंतु तापर है विदाउट एनी गोल तार नेगेटिविटी आसीगला तो वी हैव नो कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ वी वर्क वी एक्सपेरिमेंट we do experiment all these things we have achieved something we have a half lit mind but all that achievement is nothing but a passage or a phase जदि गोटे जहाज बाइनोकुलर देखिबा बहुत दूर हम देखिबा गोटे जहाज पानी समुद्र भीतर जाउछ कौन देखिबा जहाजटी समुद्र जाऊँगी जी देखु पचार कौन भाई देखिलु ना समुद्र भीतर जहाज जाऊँगी लोक अच्छा कम कर नित्य कर्म कर गाधुच पीऊँ खाऊँ शोच पुणी कम कर शोच आउ कौन देखल ना कुछ देखनी जहाज आसला कौटे जानी जहाज जीव कौटे जानी आल व्हाट एक्सपीरियंस यू गेट नील कहीं जहाजर स्टार्टिंग आ एंडिंग पॉइंट रो ब्लू प्रिंट मैप व्यू आपन नहीं सो आम जहाज जानी व्हाट एवर वी नो अबाउट द शिप दैट इज ए फ्रैगमेंट थिंग नॉट होल बिल्कुल ताकू नहीं किसी करा जाई पारे ना वी हैव नो आंसर इन कंक्रीट द अचीवमेंट डन ए पैसेज और फेज जार फार्दर एंड आम मालूम ना आम सामने लुकायित आम दृष्टिर अंतराल आम दृष्टिर बहुत दूर अंतराल बहुत दूर ये चांस हैपनिंग जहाज़टा केमती आसला मुझे जानी तार अर्थ बाय चांस शिप इज देयर हम देखिलु केमती आसी गोटे केमितर प्रश्न उत्तर ना आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन one line can change your life one word also can change your life केबे केबे सक्षम हेबे आमे केबे सक्षम हवा out of the unknown we move to the unknown आमे we don't know about the past we don't have knowledge about the future we live in present by chance ये है ना यही तो अवस्था ना कौटू आसीचु मालूम नहीं कौटी जीव मालूम नहीं कौटी अच्छु अच्छु तो अच्छु बाय चांस रो आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन तापर स्टांजाटी देखिबा एवर सराउंड आवर ब्रीफ एक्जिस्टेंस हियर ग्रे शैडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स एवर सराउंड आवर ब्रीफ एक्जिस्टेंस हियर ग्रे शैडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स द डार्क इनकॉन्शियंस साइनलेस मिस्ट्रीज स्टैंड अप अनसॉल्व्ड बिहाइंड फेट्स स्टार्टिंग पॉइंट बिहाइंड फेट स्टार्टिंग लाइन ये फेट स्टार्टिंग लाइन कौन जहाँ को नियति कहवा बाय चांस वी आर हियर दैवक्रम आम ये अच्छु जो जो स्टार्ट कलु से स्टार्टिंग पॉइंट आम नियति से माने अच्छे से स्टार्ट है माने से निर्धारित है ताकू कहला आम कहीपर ता पूर्व कथा कहीपर
कहीं देयर इज भास्ट मास इनकनसिएंट इग्नोरांस ता भीतर प्रवेश कर कैपेसिटी भी नहीं जी प्रवेश कर लीन हो तार अनआंसर्ड कौन से माने कौन से उत्तर हेतु मिलबनी एवर सराउंड आमर चारिपाखरे एक शह शह असमाहित प्रश्न आमको घेरी रही जार उत्तर आम पाखर ना ग्रे शैडोज से जो अनआंसर्ड क्वेश्चन गुड़ा गोटे ग्रे शैडो गोटे धूसर बा विषादपूर्ण छाया सृष्टि कर चारिपटे कहीं तार आंसर आम ना ता आंसर ही पाइबा बहुत कष्टकर that is the dark inconscience signless mysteries संपूर्ण अदृश्य ता भीतर प्रवेश कले निजे ही अदृश्य हो कि तार संधान पाइबनी आउ जो मुहूर्त मनुष्य चेष्टा कर निज विषय जानापी वेयर आई हैव कम फ्रॉम सामान उद्यम कले से महानिश्चेतनार घोर अंधकार तो घेरी बस इट विल स्टैंड अप अनसॉल्व्ड बिहाइंड फेट स्टार्टिंग लाइन ए पर्यंत श्री अरविंद आमर मनीषर भूत भविष्यत व्यवस्था एवं अवस्था विषय कहले ये तीन स्टांजा या परे एत कथा कहला परे गोटे हतोत्साह आसीज आम भितर गोटे साधारण मनस पाखे ये जिन पढ़ला हतोत्साह आसो तेन व्हाई वी आर हियर जदि आम किसी करूना किसी सामर्थ्य ना कि आम कथर कौन से प्रश्नर उत्तर ना आमर सत्ताटी एक महाप्रश्नवाची भितर घेरी रही ताले निश्चित गोटे विषादर महाकाल महाछाया आम घेरी बस किंतु यही लाइन रु से आरंभ कर स्टिल देयर इज होप स्टिल देयर इज एन आस्पिरेशन एक आस्पुरार बन्नी तुम बत्तर एवं भी बलवत्तर अच्छी एवं प्रज्वलित अच्छी एवं तार धिसा ऊर्ध्वमुखी ऊर्ध्वमुखी कहीं है इट इज द लाइट इट इज सर्चिंग इट्स डेस्टिनेशन व्हेयर इट हैज कम जो अनंत आलोक शाश्वत आलोक आसी से शाश्वत आलोक को खोजी खोजी से ऊर्ध्वमुख होती तार यात्रा ही से आरंभ हो घन अंधार महानिश्चेतना भीतर यात्रा दी से आलोक पर्यंत ता यात्रा जारी रहिबो an aspiration in the night's profound seed of a perishing body and half-lit mind uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. आम भीतर सीड है कि कौ जिनसटी अच्छे that seed carries from life to life, from birth to birth. And its aspiration continues from birth to birth. Towards an undying light. Your destination is undying light. That is why it is upward. Your movement is upward. एवं ये upward सहित ये ऊर्ध्वमुखीर आलोक आमर निश्चेतनार आमको तोली धरब और निश्चेतना रु आमको संपूर्ण रूप धीरे 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 ऊपर अपलिफ्ट कर तार काम है से सो नाउ टाइम हैज कम टू क्लोज दिस सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन्स फ्रॉम ए न्यू सेशन
with your regular presenter Durga Bhai. So let us meditate and conclude this session. Thank you all once again to be here. We should be truthful to the movement and meditate on Savitri. Thank you all.